Hello viewers, welcome to my डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की इक्वेशन या तो हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर into lambda minus d is equal to 0 where d is equal to a b c f g h. So this is the value of d. So discriminating cubic या तो ये फॉर्म हो सकती है या हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा b माइनस लैम्डा c माइनस लैम्डा f g h. ये हमने आर्टिकल में देखा था एफ जी एच जब हम प्रिंसिपल प्लेन का आर्टिकल कर रहे थे. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट. अब इसमें हम इक्वेशन यहाँ लिखें, अगर ये वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें सो लैम्डा क्यूब माइनस ए बी सी ऑल ऑफ देम आर 2, इट मीन्स 6 लैम्डा स्क्वायर देन प्लस b into c that is 4 plus c into a that is 4 plus a into b that is 4 minus f square 1 minus g square 1 minus h square 1 into lambda, and we have to find out the value of d. Minus d is equal to 0. So d will be 2 2 2 1 1 1. And this becomes 1 1 1. So we can expand it, and after expansion it comes. So value of d will be 2 into 4 minus 1 plus 1 into 1 minus, this is 1 1 minus 2 plus 1 into 1 minus 2. इस रो के रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंड किया. So this comes 6 and minus 1 which is equal to 4. So d value is 4. So this is the value of d. Now we got the equation lambda cube minus 6 lambda square, and this comes 9 plus 9 lambda minus 4 is equal to 0. Now if we factorize lambda cube minus 6 lambda square plus 9 lambda minus 4 is equal to 0. So 1 is, by observation we can see that this is 9 and 1 10 and 10, so this 0. So lambda is equal to 1 is one root. Another will be that if we divide it by lambda minus 1 we can see another one. This becomes lambda minus 1 lambda cube minus 6 lambda square plus 9 lambda minus 4, so lambda square lambda cube minus lambda square, so minus 5 lambda square plus 9 lambda, it gives minus 5. So minus 5 lambda square and plus 5 lambda, so this comes
4 lambda minus 4. So this was lambda, and here this is plus 4. 4 lambda minus 4, so this is 0. So lambda square minus 5 lambda plus 4 into lambda minus 1. So from here we can say plus 4 is equal to 0. Lambda square minus 4 lambda minus lambda plus 4 is equal to 0. So another root comes lambda minus 1 and lambda minus 4. So lambda is equal to 1, 1 and 4. These two are equal. This is different value of lambda. So two roots are equal, therefore surface is a surface of revolution. This is surface of revolution. Now we have seen that center equations alpha, let alpha beta gamma, ये हम center ले लेते हैं. तो center निकालने के लिए हमने देखा था 1/2 del f upon del alpha is equal to 0, 1/2 del f upon del beta is equal to 0, 1/2 del f upon del gamma is equal to 0. और ये वैल्यूज़ आती थी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं a alpha we can write down by simply taking this determinant and multiplying it by alpha beta gamma, adding UVW. So a alpha plus h beta plus g gamma, this is g, this is gamma, plus u is equal to 0. This is this one. Then second is h alpha plus b beta from second row plus gamma f plus v is equal to 0. Then g alpha plus f beta plus c gamma plus w is equal to 0, UVW. So we got this. Now we put values in this and we get 2 alpha plus beta plus gamma plus 3 is equal to 0. Second will be alpha plus 2 beta plus gamma plus 1 is equal to 0. Because we have already written values of a, b, c, which are 2, 2, 2, f is 1, g is 1, h is 1, u is 3, v is 1 and w 4, d is 4. So from here we got third equation, which is alpha plus beta plus 2 gamma plus 4 is equal to 0. If we solve these equations, we will find out the values of alpha, beta, gamma. Suppose we take these two values, these two equations, and we subtract them. So minus, it becomes beta minus gamma minus 3 is equal to 0. So we take this one and the third equation. So third equation will be alpha plus beta plus 2 gamma plus 4 is equal to 0. We are solving these two. So minus, so this is cancelled out. So alpha minus gamma minus 1 is equal to 0. So if we solve them, so this comes beta minus alpha minus 2 is equal to 0. Beta is equal to alpha plus 2 and beta is equal to gamma plus 3 from here. Or we can say alpha is equal to beta minus 2 and gamma is equal to beta minus 3. So we put in the equation
in the first equation 2 alpha means 2 beta minus 2 plus beta plus beta minus 3 plus 3 is equal to 0. So we get twice beta minus 4 plus beta minus 3 plus 3 is equal to 0. So 2 4 beta and minus 4. So beta is 1, alpha is minus 1 and gamma is minus 2. So root center value is minus 1, 1 and minus 2. So this is alpha, beta, gamma, center. Fine. Now we want to find out mu value, because we need mu also for writing the equation in standard form or the reduced equation. So for that we will be finding the mu also. So the standard form or the reduced form, reduced equation is hence lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square is equal to mu. So mu is equal to minus u alpha plus v beta plus w gamma plus d, and this can be written as minus we have taken 3 into minus 1 plus 1, v is 1, beta is 1, w is 4 and gamma is minus 2 and d is 8. So this gives 2, minus 3 1, minus 8 plus 8. So minus 2 and minus plus 2. Now we get this equation lambda 1, lambda 2, lambda 3 we know 1, 1 and 4. So 1 into x square plus y square, 1 into y square plus 4 z square is equal to 2. This is the equation. Further we can write down x square by 2 dividing by 2, y square by 2 plus z square upon 2 upon 4, that is 1 by 2 is equal to 1. So this represents ellipsoid of revolution. ये जो है ellipsoid of revolution को दिखाता है. And squares of whose semi axes are, these are the squares of a square, b square, c square. a b c क्या है, जब इलिप्स की बात कर रहे हैं इलिप्सॉइड की, तो ए बी सी उस केस में सेमी एक्सेस है. सो दिस इज द स्क्वायर्स ऑफ whose semi axis are 2, 2 and half. ठीक है यहाँ तक. नाउ हमें DCs निकालने हैं, बिकॉज हमें फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए हमें DCs की ज़रूरत है. सो द DCs LMN, अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस का आर्टिकल रिमेंबर करें आप, तो उसी के हम यूज़ करेंगे. ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग को तो हमें किस लैम्डा के लिए लेना, जो कि अलग है, जो कि सेम नहीं है. दो जो सेम है उन्हें छोड़ देना. कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 4, विच इज़ नॉन रिपीटेड रूट, non-repeated root are given by
ये क्या होगा, जो ए एल प्लस एच एम प्लस जी एन अपॉन एल इज इक्वल टू एच एल प्लस बी एम प्लस एफ एन अपॉन एम इज इक्वल टू जी एल प्लस एफ एम प्लस सी एन अपॉन एन इज इक्वल टू 4. ए इज इक्वल टू लैम्डा होता है, विच इज लैम्डा इज 4 हेयर. सो ए वी नो 2, L plus M, H is 1, G is 1 upon L is equal to 1 plus B is 2, F is 1 upon M is equal to 1L plus 1M plus 2N upon N is equal to 4. तो यहाँ से इक्वेशंस आ गई. 2L plus M plus N is equal to 4L. It means minus 2L plus M plus N is equal to 0. Second we L and minus 2M plus N is equal to 0. L then plus M minus 2N is equal to 0. तो यहाँ से अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो ये L upon 1, because we can write down L M N. So ये इक्वेशंस क्रैमर रूल हम लिख सकते हैं. अब L के लिए लिया तो this into this minus this into this, so this becomes 4 minus 1 minus 4 minus 1 M upon M is this, so M upon will be N into 1 minus plus 2, so this is L upon will be minus plus 4 minus 1 and N upon so by using Cramer's rule we can write down L upon 2 this into this, 2 into 2 with minus sign plus 4 minus 1 this term cross multiplication, so minus 1 is equal to M upon this into this, that is 1, and minus 2 into 1 with minus sign, so plus 2 is equal to N upon, for N will be 1 minus plus 2, so L upon 3 is equal to M upon 3 is equal to N upon 3, which can be written as L upon 1 is equal to M upon 1 is equal to N upon 1, and which is equal to 1 upon under root 1 square plus 1 square plus 1 square, which is 1 upon root 3. इसलिए जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा एंड द इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस corresponding to lambda is equal to 4 होगा, उसको हम लिख सकते हैं. Hence the equations of the axis of rotation that is the equation of the principal axis
corresponding to the non-repeated value, that is lambda is equal to 4, that is the equations of the straight line जो ये हमारा सेंटर आया था उससे पास होने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर, -1 1 -2 और जो DCs आए थे, एंड विद DCs जो LMN की वैल्यू आ गई प्रोपोर्शनल टू DCs LMN क्या थे 1 1 1, L/1 इज इक्वल टू M/1 इज इक्वल टू N/1। तो क्या होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो कि -1 1 -2 जो सेंटर है इससे पास हो रही है और जिसके DCs इसके प्रोपोर्शनल है 1 1 1 के। तो ये होगा x -+1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z -2 इज +2 अपॉन 1, विच गिव्स x +1 इज इक्वल टू y -1 इज इक्वल टू z +2। यही हमें शो करना था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जबकि हमारे रूट थर्ड केस है, पहला हमने कर लिया जबकि रियल है, सेकंड हमने कर लिया जबकि दो इक्वल हैं। अब थर्ड केस है, केस थर्ड है जबकि डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक के वन रूट जो है 0 है, व्हेन वन रूट ऑफ द क्यूबिक डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज 0 एंड k विच इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर कि k की वैल्यू है UL प्लस VM प्लस WN, ये 0 के बराबर नहीं है। ऐसी सिचुएशन का हमें एग्जाम्पल करना है। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल 2017 में आया था। प्रूव दैट x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस zx माइनस xy माइनस 3x माइनस 6y माइनस 9z प्लस 21 इज इक्वल टू 0 represents a paraboloid of revolution and find the coordinates of its focus. Also find the equations to its axis. ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो या तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, या हम हाफ हाफ के केस में ले लें। जैसे कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax मीन्स 2x, तो a2 हो जाएगा। और अगर हम ऐसे ही लेंगे तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 इज b सी दीज आर इक्वल 1 एंड f विल बी f g h, ये तीनों इक्वल हैं।
जो कि माइनस हाफ के इक्वल है. एंड देन यू वी डब्ल्यू, u is minus 3 by 2, v is minus 3, w is minus 9 by 2 and d is 21. ये वैल्यूज़ हो गई. अब डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू लिखनी है. सो द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज लैम्डा क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी लैम्डा स्क्वायर. अल्टरनेट होते हैं ये साइन. लैम्डा क्यूब प्लस है, फिर माइनस, देन प्लस, देन माइनस. सो ये होगा दैट इज बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस डी इज इक्वल टू 0. प्लस माइनस is equal to 0. Now what will we do? Is equal to 0. Now we will put the values, and the value that is lambda cube minus 3 lambda square plus BC is 1 means this will be 3 minus F square is minus 1 by 4 minus 1 G square H square into lambda, and D will be 1 minus half minus half minus half minus half minus half minus half. It gives 1 minus 1 by 4 minus half plus 1 by 4 plus 1 by 2 minus half 1 by 4 minus plus 1 by 2. This comes 3 by 4 minus 1 by 2 into 4 3 by 4 minus 1 by 2 3 by 4. So this becomes 3 by 4, and this is half of that, this is half of that, so this is 0. So D is 0 here. So we get the equation lambda cube minus 3 lambda square, and this one, this is 3 and minus 3 by 4. So that becomes 12 minus 3 means 9 by 4 minus 9 by 4. Lambda is equal to 0. So this is the discriminating cubic. So this is lambda cube minus 3 into lambda square plus AB, this multiplication will give 1 1 1. So 3 minus F square is minus 1 by 4 minus G square is 1 by 4 H square is 1 by 4 into lambda minus D is equal to 0.
So D value is 1 1 1 minus 1 by 2 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 minus 1 by 2. So we open it 1 minus 1 by 4. This is 1 minus 1 by 4 minus 1 by 2. We are doing with respect to this. So minus 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 2. So this is equal to basically 3 by 4 minus 1 by 2, 3 by 4 minus 1 by 2, 3 by 4 is equal to 0. So D is equal to 0. So we get this equation, lambda cube minus 3 lambda square, then this becomes 3 minus 3 by 4, 12 minus 3 minus 9 by 4 into lambda is equal to 0. So this is discriminating cubic. So discriminating cubic is lambda cube is there, and lambda we can take common, and 4 as an LCM. So 4 lambda square minus 12 lambda plus 9 is equal to 0. So lambda, and this is basically 2 lambda minus 3 whole square is 0. So lambda is equal to 0, lambda is equal to 3 by 2, 3 by 2. These are the roots, 2 are equal and 1 is 0. So since 2 roots are equal, the conicoid is surface of revolution. Is this surface of revolution? And we now find out the DCs. DCs will be corresponding to lambda is equal to 0, we will be finding out. So right hand side is 0. So if we write in denominator, the equation was AL plus HM plus GN is equal to 0. This will, because AL plus HM plus GN upon L is equal to lambda. Lambda is 0, so they become AL plus HM plus GN is equal to 0. Second again L plus HL plus BM plus Fn upon M is equal to 0. So this becomes 0. And third GL plus FM plus Cn upon N into lambda, so that also 0. So these are the equations for DCs. So the DCs LMN of the axis corresponding to lambda is equal to 0 are given by these equations. Say A. We will solve these equations. First we will put the values of A, B, C, HLM, H, G, F, whatever. So 2L minus M minus N is equal to 0. This is, say, equation 2 if given one was the 1, and minus L plus 2M minus N is equal to 0, minus L minus M plus 2N is equal to 0. We will solve them.
By Cramer's rule, we can write down L upon this, which is 4, minus, and this is plus, then minus 1, is equal to M upon, for M it will be 1 and plus 2, N upon 1 plus 2. So this is L upon 3 is equal to M upon 3 is equal to N upon 3. Can be written L upon 1, M upon 1, N upon 1. So we get, this is 1 upon under root 1 square plus 1 square plus 1 square. So 1 upon root 3. And K value is UL plus VM plus WN. So this is minus 3 by 2 into 1 by root 3 plus V value is 3 into 1, 3 with minus sign, into 1 upon root 3, and W is minus 9 by 2 into 1 upon root 3. So this comes 3 by 2 root 3, 1 by root 3 we take common, and this will be minus also we take common. So minus 1 upon root 3, 2 is LCM, minus 3 plus 6 plus 9. So 3 till 6. So this becomes 9 and 6, 15, 18 upon 2. So 3 root 3. Now the reduced equation is or standard equation is plus 2kz is equal to 0. जब हमने प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ए जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म किया था एंड डिस्कस द नेचर, उसमें हमने ये केस आफ्टर 4 स्टेप्स वी हैड सीन दैट अगर k इज़ नॉट इक्वल टू 0, उस केस में जो रिड्यूस्ड इक्वेशन होती है वो लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस 2kz इज इक्वल टू 0 होती है, जो कि इलिप्टिक और हाइपरबोलिक पैराबोलाइड को शो करती है. और वर्टेक्स जो है वो हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके 1 2 3 इक्वेशन और इक्वेशन 4 थी तो उन्हें सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते थे. ये सेकंड टाइप का केस है जहाँ तक हम याद करें. जब सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की थी जिसमें हमारी फॉर्म आती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2cz. हमने जब दो फॉर्म इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी तब लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2μz इस तरह की फॉर्म हमने यूज़ की थी. उस केस में ये इलिप्टिक और हाइपरबोलिक पैराबोलाइड की फॉर्म आ जाती हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cz या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cz. सो ये वो फॉर्म है. एंड यहाँ पर फिर हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं लैम्डा की. तो ये वैल्यू आएगी 3/2
बिकॉज लैम्डा की वैल्यू है 3/2 3/2 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 6√3, ये वैल्यू है के की, इंटू जेड. 2k becomes this 6 3√3 with minus sign, so 6√3 into z is equal to 0. So this becomes x square plus y square is equal to 4√3 z. अब वर्टेक्स जो है वो किन्हीं भी दो इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करें तो ऑब्टेन हो जाएगा. कौन सी दो इक्वेशंस हैं? ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड माइनस एल के प्लस यू इज इक्वल टू 0. तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे जब हमने प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ए जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका डिस्कस द नेचर किया था, तो स्टेप 4 में हमने ये केस लिया था कि अगर 1√0 है तो उस केस में हमने L3 M3 N3 फाइंड आउट किए थे, जो यहाँ पर LMN है जो कि DCs है उस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जिसकी वैल्यू 0 है. और अगर K 0 नहीं था, दो केसेस थे, K 0 नहीं है और K 0 है. K 0 नहीं था तब इक्वेशन थी λ1 एक्स स्क्वायर प्लस λ2 वाई स्क्वायर प्लस 2kz इज इक्वल टू 0. एंड उसके साथ तीन इक्वेशन थी जो कि ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड माइनस L3 के प्लस यू इज इक्वल टू 0. सो L3 इज L हेयर एंड 2k. एंड नेक्स्ट इक्वेशन थी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस एफ जेड माइनस M3k प्लस v इज इक्वल टू 0. एंड वन मोर इक्वेशन gx प्लस एफ वाई प्लस सी जेड माइनस M3k प्लस w इज इक्वल टू 0. एंड इक्वेशन 4 भी गिवन थी which we will be writing here. Equation 4 was k L3x, so Lx plus M3y My plus M3z Nz plus Ux plus Vy plus wz plus d is equal to 0. तो ये इक्वेशन 4 थी और ये इक्वेशन 1 2 3 थी. इन्हें सॉल्व करके हम वैल्यूज़ निकालते हैं. सो यहाँ पर इन इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएंगी x माइनस वाई बाई टू माइनस वाई बाई टू जेड, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, प्लस 3 माइनस देन दिस वाज plus u is minus 3/2 is equal to 0. Then minus 1/2 x plus y minus 1/2 z plus 3 minus 3 is equal to 0. And minus 1/2 x minus 1/2 y plus z plus 3 minus 9/2 is equal to 0. So ये values हमें obtained हो गई. ये this equation is ax plus hy plus gz minus lk plus u is equal to 0. And similarly here this is hx plus by plus fz minus mk plus v is equal to 0. This is gx plus fy plus cz minus nk plus w is equal to 0. And k वाली इक्वेशन है, that is fourth equation. So minus 3x plus y plus z minus 3/2x minus 3y minus 9/2z plus 21 is equal to 0. So we got these equation. This is equation for k, which is k lx plus my plus nz plus ux plus vy प्लस wz प्लस d इज इक्वल टू 0. अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें जो फर्स्ट थ्री इक्वेशन है, तो एंड दिस के इक्वेशन एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सिंप्लीफाई करके अगर हम इन्हें लिखें, सो दिस इक्वेशन 2x
minus y. We are taking LCM, so 2x minus y minus z, and this becomes 3 by 2, so LCM we are taking, so plus 3 is equal to 0. Second one is minus x, again LCM, plus 2y and minus z, and this will cancel out, so this is 0. And third equation is again LCM, minus x minus y plus 2z, and here it will be 6 with minus sign, so 9 by 2 and minus 6 minus, so and 2 will be 0 because we have taken LCM cross multiplication, so this is minus 9 plus 6 upon 2, so this will be minus 3 by 2, so minus 3 and by 2 will be cross multiplication. This is the equation, so we take these two, and the fourth equation this will give, so we divide the equation by 3, it becomes minus x plus y plus z, because it was k into lx plus my plus nz. K is minus root 3 into 3, and L is 1 upon root 3, M is 1 upon root 3, N is 1 upon root 3, so this is from there. So we are dividing by 3, minus 1 by 2 x minus y minus 3 by 2 z, and this will be 7. We take LCM, so minus 2x minus 2y minus 2z minus x minus 2y minus 3z plus 14 is equal to 0. So this becomes minus 3x minus 4y and minus 5z plus 14 is equal to 0. So we can write down 3x plus 4y plus 5z minus 14 is equal to 0. So this is equation corresponding to k. Okay, so we got this equation. Now we solve and get values. So solving this equation and this equation, we get equations 2x minus y minus z plus 3 is equal to 0, minus x plus 2y minus z is equal to 0, and 3x plus 4y plus 5z is equal to 14. These we have to solve. So from here we take these two equations, so 2x minus y minus z is equal to minus 3. We multiply this equation by 2, so minus 2x plus 4y minus 2z is equal to 0. So we subtract minus 5y plus z is equal to minus 3. Now we take these two equations and multiply it by 3 plus 6y minus 3z is equal to 0, 3x plus 4y
plus 5z is equal to 14. Subtract or add 10y plus 2z is equal to 7. So we add 2z is equal to 4z is equal to 2 and 5y is equal to 5, y is equal to 1. So x is equal to, if we put in the first equation, 2x minus 1 minus 2 plus 3, so this cancels out, so x is equal to 0. So values are x0, y1 and z is equal to 2. So these are the values of x, y, z. So vertex is 0, 1, 2. The equation to its axes are x, because इस पॉइंट से पास होगी लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से 0, 1, 2 से पास होगी और LMN हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. सो y minus 1 upon root 3 is equal to z minus 2 upon 1 upon root 3, which is equal to say r. So x is equal to y minus 1 is equal to z minus 2. So from equation which we have got, that is reduced equation, x square plus y square is equal to 4 root 3z. This was the reduced equation we obtained with lambda 1 x square plus lambda 2 y square is equal to minus 2kz or plus 2kz is equal to 0. So we got this equation from there. So this, it from this equation, from equation say B, it follows that the length of the latus rectum कितनी है 4 root 3. Hence the focus lies on the axis, on the equation of axis 6. This is, we say, equation C at a distance 1 by 4 root 3, that is root 3 from the vertex. And therefore r, if we find out r will be, this is the r will be root 3. So we get the coordinates of the focus. And we substitute in C, value of r in C, in equation C. So we get root 3 into 1 upon root 3. So we got the length of latus rectum and focus lies on the equation C, on this equation, and
distance, at a distance 1 upon 4th of this, 1 upon 4th, which is root 3. Now r is root 3, it means r is root 3. We put this value in equation C, and from here we can find out x is equal to 1 upon root 3 into root 3. So we can write down the coordinates of the focus. So this becomes root 3 into 1 upon root 3. Y will be 1 plus root 3 into 1 upon root 3, that is 1, and z will be 2 plus 1 root 3 into 1 upon root 3. So this becomes 1, 2, 3. These are the coordinates of the focus. So this is what we had to show. In next lecture we will see the next case when the value of k is 0. That is the fourth case, and then the equations to the axis. Thank you.